जैसे कि एक नाम है आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जिनके नाम से बोलबाला है, वो अपने हैं भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय महोदय नरेंद्र मोदी जी। और आज के हमारे इस भारतीय शुगर परिवार के प्रमुख अतिथि जो हैं, जो खासकर कानपुर से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के आदरणीय नरेंद्र मोहन जी। सरनेम अलग है लेकिन कर्तृत्व, दातृत्व, नेतृत्व उतना ही विशाल, उतने ही महान विचार और महान कार्यों में ये नाम है। मैंने इसलिए कहा कि आदरणीय महोदय का नाम भी नरेंद्र जी है। तो एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोहन जी के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो आज का एक बहुत ही प्यारा सा अपने अल्फाजों में आपके अपने आशीर्वाद शुभकामनाएं हमें दे। मैं आदरणीय नरेंद्र मोहन जी से रिक्वेस्ट करता हूं, जोरदार तालियां हो जाए नरेंद्र सर के नाम। गुड मॉर्निंग शिंदे साहब, पूरा भारतीय शुगर परिवार। पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं, दोनों ऊहापोह की स्थिति थी, तो मैं समझता हूं दोनों मिला के बोलूंगा तो बेहतर रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक मिस्टर शिंदे, होल भारतीय शुगर परिवार for calling me on this occasion and joining hands with National Sugar Institute, Kanpur. I have been to this place for this ceremony for the first time. National Sugar Institute is joining Bharatiya Sugar for the first time during this. You are having the 5th Bharatiya Sugar Awards. I have been to Pune a number of times doing many things with JPMA, and JPMA knows and many of you know कि why Maharashtra or Pune or its adjoining area is very close to me and close to my heart. The reason is very simple, because after working in the sugar factory for few years, when I came back to the institute, I joined the Pune cell. We used to have a Pune cell at National Sugar Institute, Kanpur, and perhaps I was the last person to be recruited in the Pune cell. So that way Pune is very close to my heart. Otherwise also because Maharashtra is always doing wonders, not only in sugar production, but doing many things new, many things innovative as far as the sugar production is concerned, adoption of the technologies, and leading the whole sugar industry from the front in adopting innovative ways. So thanks Bharatiya Sugar Parivar for calling me here, being a part of you, and to be a part of the technical proceedings, to be a part of the award ceremony. He was asking me to speak something on the sugar industry also. मैं क्या बोलूं? Nowadays everybody is speaking or talking about something like PPP models. I hope this model PPP stands for sugar industry also. जैसे कि हम पीपीपी की बात कहीं और करते हैं, तो मुझे शुगर इंडस्ट्री के लिए ऑलवेज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द शुगर इंडस्ट्री और अदरवाइज ऑल्सो, टू मी एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पीपीपी. द पी इज़ द पॉलिसी, द सेकेंड पी इज़ द प्रोडक्टिविटी एंड द थर्ड पी इज़ द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. 3 चीज़ें हैं जिसके मैं समझता हूँ कि इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं. Whenever we are sitting, we are doing any brainstorming, every time we are talking about only one thing: how to make this industry sustainable. Sustainability is a big question mark. How to make Indian sugar industry sustainable. गन्ना देखने में जितना सीधा है और जितना मीठा है, मेरे को लगता है शुगर इंडस्ट्री उतनी मीठी और उतनी सीधी नहीं है. Because of the fact that all the stakeholders are having problem at one or another time. Sometimes the golden days are there for the sugar factories, they are in a happier position, may not be the farmers. Sometimes the suppliers are not feeling good enough. तो कभी बहुत ही कम समय हमारी शुगर इंडस्ट्री में ऐसे आते हैं when all the stakeholders are in a win-win situation.
I think Sundaram Sahib is going to speak, and many more to follow him to speak on how to make Indian industry sustainable. We did a rather brainstorming session at Pune also, NSI JPMA. We did a seminar there. Yes, we have to think something innovative. We have to come out from our shackles, from watertight compartments, and we have to develop the out-of-box thinking. Today, subtropical region, we are talking a lot on subtropical region nowadays because of the recoveries which we obtained during the last 2 years. Subtropical region was traditionally a lower recovery area, and we used to have a lot of gap between the recoveries which we do have in the tropical region and which we used to have in the subtropical regions. But there is a turnaround. We may owe it to development of the newer sugar varieties. We may owe it to the climatic conditions. And we also owe it to cane management system. At the end of the day, we could make the people realize that don't run after the sugar losses in the sugar factory. क्या होता था? मेरे को बहुत फक्र होता है कि मेरे साथ के लोग बैठे हुए हैं. They are going to get the award today. Very competent production managers and cane managers and the unit heads. Subtropical region में आज, because I am getting more and more people from tropical पार्ट ऑफ द कंट्री. महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, तमिलनाडु से मुत्तू वलेपन जी से भी तमाम बार बात होती है. निजलिंगप्पा के डायरेक्टर बैठे हैं. ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आप लोगों ने क्या किया सब ट्रॉपिकल रीजन में. तो सब ट्रॉपिकल रीजन में कुछ भी नहीं किया. वो चीज़ की जो कि करनी चाहिए थी और पहले करनी चाहिए थी. वेराइटल डेवलपमेंट किया. भगवान हमारे साथ थे. क्लाइमेटिक कंडीशंस वर कंड्यूसिव. और केन मैनेजर ने ये रियलाइज़ किया कि फैक्ट्री के अंदर, या मैं ये कहूँ कि जो फैक्ट्री के मालिकान थे उनके अंदर ये बात आई कि केवल फैक्ट्री के अंदर लॉस ढूंढने से कुछ नहीं होगा. कितना लॉस कोई छुपाएगा. दिस आई एम जस्ट स्पीकिंग बिकॉज आई एम ए शुगर टेक्नोलॉजिस्ट बाई प्रोफेशन. कितना लॉस छुपाओगे आप? 1.6, 1.7 का 1.5 दिखा लोगे, 2 का 1.8 दिखा लोगे. बट कैन यू हैव अ गैप ऑफ रिकवरी वी एस्केलेटेड फ्रॉम 9.05 to 10.6. कैन यू बिलीव इट? राइज इन रिकवरी टू द एक्सटेंट ऑफ 1.55. मेरे को नहीं लगता कि कोई भी शुगर फैक्ट्री इतना लॉस छुपा सकती है. देयर वर द डेज 2-3 years back only when we used to have a lower recovery, the people used to run to the sugar house. मोलासस की देखो भाई प्योरिटी कितनी चल रही है, what is the pole % bagasse and all that. Not today, nobody is going to the boiling house. And the refineries, they are having the sugar loss as low as 1.6% on cane only. But the whole credit goes to the entire team. और सबसे बड़ी चीज़ थी केन मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने किया. एंड वी कुड फॉलो द कट टू क्रश डिले शुड बी द मिनिमम, द केन शुड बी क्लीन एंड द वैराइटल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी देयर. चलिए गन्ने में तो चीनी आ गई, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस को वी कैन नॉट ऑलवेज से कि दे विल रिमेन एज सच. एंड वन वर्ड ऑफ कॉशन इज ऑलवेज फ्रॉम माई साइड. As you are having a sugarcane variety 86032, if I am right, in the tropical region, and that recovery, that particular cane variety is lasting from the last 20 years or so. We used to have a sugarcane variety COJ 64. It had its golden times there. Never depend upon a single sugarcane variety. You have to develop the sugarcane or sugarcane varietal museum. There is a word of caution I give to my fellows in the subtropical region also. Today you are vouching for a particular variety. I know that variety was developed around 5-6 years back, and every variety has got its own life. There are signs of deterioration in the variety, and the variety is not going to last for more than 3-4 years. What will happen to you then? So develop a varietal museum, whether you are sitting in the subtropical region or you are sitting in the tropical region.
We can talk a lot in length and breadth about the technological developments. To be very, crispy and precise, I fail to understand one thing. Why we people in India are continuing with the age-old process of making sulfitation sugar. What is the problem if we go for the raw refined route? Few days back I presented a paper in DSTA also talking about why we people cannot consume raw sugar. Gone are the days when we used to have the raw sugar of 96 pole, having the color value of 1000, 1500, 2000, 2500 and all that. If you see the raw sugar which is being produced in the country, 350, 400, 450 comes a pole percent, more than 99.5. We can always improve upon the color. So can we not consume the raw sugar? Because it is going to give you two routes. You can always go for refining, producing sugar for the industrial users, and you can consume it as such also. If you do have the paucity of the sugar production, you can take the raw sugar and you do have the refining facilities with you and you can convert it into refined sugar and you can consume it. So the market will be wide open. Second, yes, Raskar Saab was correct in talking about the utilization of the biomass. I do have my own apprehensions. When I took over as a director of this prestigious institute, I was thinking why we people are always talking about energy or cogeneration from the biomass or from the bagasse. It is comprising of three vital elements: cellulose, hemicellulose and lignin. In due course of the time, the people started talking about the cellulosic ethanol as well. Although the technology was not at place, and even today, we are not sure about the cost of production of the cellulosic ethanol in India. Can we think more than that? Or we should continue talking about the utilization of the bagasse as a fuel only? Should we continue talking about the press mud to be used as a biomanure or for biocomposting purposes? Fortunately, I had a very good team of people working at National Sugar Institute, the new entrants, Dr. V.P. Srivastava, I think he is there, and a research scholar, Anushka Agrawal, she was there, and we made the breakthrough. And that breakthrough was on two counts. One, successfully we could produce biodetergent or surfactant from the bagasse, and we could produce bio-CNG from the press mud also, not banking upon any imported technology, very indigenous, make in India. So we have to develop and we have to find the innovative means and rather ways and means how to have value additions from the byproducts, so that your byproducts, they take over the sugar and they become the products. तो मेरा केवल इतना ही सोचना है कि keep on discussing, deliberating, interacting and doing something together. आज भारतीय शुगर का प्लेटफॉर्म है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसे सेमिनार में और इतने कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, व्हाट वी आर गोइंग विद व्हाट टू आवर होम. वी आर ऑलवेज गोइंग विद समथिंग न्यू, सम नॉलेज. एक चीज़ मुझे, जो निजलिंगप्पा शुगर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी बैठे हैं, वी आर वर्किंग मैनी थिंग्स टुगेदर ऑल्सो, जो चीज़ मुझे बार बार लगती है, एंड आई हैव बीन वेरी वोकल ऑन दैट काउंट ऑल्सो, वी वांट टू डेवलप एनीथिंग फॉर द इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री वांट मैनी थिंग द इंस्टीट्यूट शुड डू, बट दे आर नॉट डूइंग टुगेदर. बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, नॉट ओनली शुगर इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट देर इज़ ए लैक ऑफ कोलोबरेटिव वर्क. शायद कहीं हमको ये लगता है कि अगर इस काम को हम इनके साथ मिलकर करेंगे तो क्रेडिट विल गो टू हिम, और वी आर नॉट गोइंग टू गेट द क्रेडिट.
I won't mind giving credit to anybody till it is in favor of the sugar industry. हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए यहाँ पे हैं और किसके लिए हमको, for what we are being paid. We are being paid for the industry, to do something good for the industry. Why can't 2 institutes, 3 institutes, 4 institutes can come together? हो सकता है कि मेरा बहुत सीधे से मानना यह है कि वी आर नॉट द लास्ट वर्ड. नथिंग इज सो परफेक्ट विच कांट बी इम्प्रूव्ड ऑल्सो. आपकी स्ट्रेंथ होंगी, आपकी वीकनेस भी होंगी, मेरी भी स्ट्रेंथ है, मेरी भी वीकनेस है, मेरे स्टाफ की भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं. हो सकता है कि किसी एरिया में आप ज़्यादा जानते होंगे, किसी एरिया में हम ज़्यादा जानते होंगे, किसी एरिया में कुछ और ज़्यादा जानते होंगे. आई टेल यू वन crude example before I occupy my chair. Many things, you know, since I opened my eyes, we are taking the sugarcane juice, and from the last decades, I am getting the news of sugarcane preservation. Many papers, writing papers is a separate phenomena. I am not going to discourage writing papers. I can write any amount of the papers, but I would like to see at the end of the day how it is going to help the sugar industry. I belong to a place, I am a person who is always interested in ROI. मेरे को इस करने से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है. शुगर केन जूस के प्रिजर्वेशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर was very keen to know कि can we use any fruit juice instead of sugar for making any sort of the beverages. Sugarcane juice is there. We vouch for, और हम बार बार बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि साहब हम तो इतने सालों से हैं, we are second largest in sugar production, we are producing consumers, highest consumers also. तो क्या sugarcane juice preservation की कोई टेक्निक नहीं कर सकते? There are papers, there are press releases, but I don't think the टेक्नोलॉजी हैज़ बीन कॉमर्शलाइज्ड एज येट. और कोई भी चीज़ कॉमर्शलाइज तब तक नहीं होती जब तक कि द पर्सन हु इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट प्रेटी श्योर अबाउट द प्रोडक्ट. आपको जब तक ये मन में विश्वास नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी कामयाब होगी कि नहीं, आप उसको कॉमर्शलाइज नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू पुट योर मनी ऑन दैट. तो कमिंग टू माई एग्जाम्पल, आई थॉट, आपने बात कर ली फ्रीज ड्राइंग की, आपने बात करी कि हम इसमें तमाम सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाएंगे. So once I was sitting, I do have a bad habit of pulling my people and reviewing the things again and again. And also I do have a bad habit of interacting directly to my research scholars bypassing the total system. But that gives me a real taste of what is happening and what are the problems at the ground level. मैंने उनसे पूछा कि तुमने बायो डिटर्जेंट डेवलप कर लिया, बायो सीएनजी कर ली, वी आर गोइंग टू कॉमर्शलाइज इट एंड वी आर गोइंग फॉर द पायलट स्केल ट्रायल्स एज वेल. बट वन मोर विजन इज विद मी, कैन वी डू समथिंग विद द शुगर केन जूस प्रिजर्वेशन. नाउ द थॉट केम फ्रॉम ए गर्ल हु जस्ट डिड हर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी. सर, देयर आर मैनी टेक्निक्स विच आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन अदर बीवरेजेस. उसने इन सब की बात नहीं की जो तमाम सारी बातें हम लोग परंपरागत रूप से अपनी शुगर इंडस्ट्री में देखते हैं. मैं उस बात के लिए इसलिए कह रहा हूं कि हम दूसरी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे. अगर मुझे मालूम है तो मैं डॉक्टर खांडगावे को नहीं बता रहा हूं, डॉक्टर खांडगावे को मालूम है तो मुझे नहीं बता रहा, या कोई और इंस्टीट्यूट वाला तो मुझे नहीं बता रहा. आई एम जस्ट गिविंग द नेम्स, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट द नेम. वी सेड कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 शुगर केन जूस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, एंड दोज टेक्निक्स वर न्यू टू मी एट लीस्ट, क्योंकि मैं तो फ्रीज ड्राइंग और प्रिजर्वेटिव ऐड करने के अलावा नहीं जानता था. शी सेड कि वी कैन गो फॉर हाई प्रेशर पास्चराइजेशन एंड पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड. बोथ द कंसेप्ट्स वर न्यू टू मी कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और हाई प्रेशर पास्चराइजेशन क्या होता है. इमीडिएटली वी हैड ए मीटिंग, एक कोर ग्रुप बनाया हमने, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा जो था उसको लिया, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव को लिया, उस जो रिसर्च स्कॉलर थी उसको लिया. नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो कैन वी डू प्रिजर्वेशन. मैंने उससे कहा कि आई एम नॉट वेरी कीन कि इसको 6 महीने रखा जाए. वी कैन हैव द एसेप्टिक एटमॉस्फियर एंड कैन वी प्रिजर्व द जूस फॉर 1 month in natural aroma. Now we are going to do that.
बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। हम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और हमारी जो लिमिटेशंस भी बहुत सारी होती हैं। फॉर्चुनेटली वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मैनी बिग हाउसेस दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव सपोर्टेड अस। मेरा सिर्फ आज इस मौके पे इतनी आप लोगों से कहना था, विनती थी कि शुगर इंडस्ट्री को अगर सस्टेनेबल बनाना है, सर्वाइवल इसका चाहना है, तो आगे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो। क्योंकि बगास बेस्ड को जनरेशन की जब आप बात करेंगे तो इन द टाइम्स टू कम आई एम वेरी एप्रीहेंसिव, बिकॉज टुडे यू आर कंपीटिंग विद द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और आपको मालूम होगा कि सोलर पावर का ₹2.44 रेट कोट हो चुका है और स्टिल लोअर दे आर गोइंग। तो इफ दे आर ऑफरिंग ए रेट ऑफ ₹2.44, हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द बगास बेस्ड को जनरेशन। और अगर बगास बेस्ड को जनरेशन नहीं होगा तो बगास कहाँ जाएगी? अगेन दैट विल बिकम अ $1 million क्वेश्चन। सो विद दिस आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट द होल भारतीय शुगर परिवार फॉर द step they have taken this year. They are going to have a fantastic evening also, having the people from Nepal and Ethiopia. Congratulate Shinde Saab for the untiring efforts, because I was in touch with him from the last few months and I could see it's a one-man army moving here and there, although ably supported by other people also. But his vision, and Shinde Saab, I can assure you, we at National Sugar Institute are always with you for any analytical or the technical endeavor. Keep rocking. Thanks a lot. Hope you are going to have a wonderful evening. Jai. धन्यवाद सर, आपके अनमोल विचार हम सभी को प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।